and he's got the dismissal of Tristan Stubbs. Gone for 9. South Africa 30 for 4. अरे बचाओ आओ जी खड़ाओ सेल्फी बाजी हाँ जी थोड़ा साइड हटिए ना जेट के साथ अकेले फोटो लेनी है फूल चंदी तो हो गए फूल के कुप्पा स्टार स्कैनर प्रेजेंट्स जीतो दंदनादम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के दौरान जीतो टैब पे जाओ आसान से सवालों का जवाब दो और पाओ प्राइवेट जेट में उड़ने का मौका स्काई स्कैनर पे पाइए चीपेस्ट फ्लाइट और होटल रेट यही है अल्टीमेट ट्रैवल है स्काई स्कैनर प्रेजेंट्स जीतो दंदनादम This isn't just a game. It's a test of pride, power, and pure swag. Every serve hits harder. Every rally grows stronger. Because here, every point is a stake. this is the tennis pause powered by Pure Premium Water. लाइव पॉज नहीं होता कोई बात नहीं छोड़िए वो अकेले इनाम रख देते सामने moving very quickly. 4 wickets falling in the first 7 overs. Hardik striking in his first, getting to his 100 wickets. This is Chakravarti. He's a terrific cricketer, match winner with a bat. Quietly does the job with the ball as well. Beautiful line, good movement, nice bounce as well. रोटेट कह रहा है There's a spring in his Friday Indians today. Obviously rattled by what happened in the last game. Come on, firing on all cylinders. There seems to be a sense of urgency, just the way they've run in today. Ravi, with the way the ball's done up and Dale as well, do you think there is a place for maybe Shivam Dube to roll in a few overs because of what it has done so far? I would imagine tosses for courses. He will see what's happening. He has that option. So sure he might use it. I know there's Kuldeep playing. But a couple of overs from Shivam Dube just to see makes sense. So he was walking towards Pandya. Just shortened his length. He's one of the best all-rounders in the business in this format of the game. That's in the air, short of the man at deep mid wicket. They're desperate for Aiden Markham to have to bat through now. And the tail, they've pushed Bosch up ahead of Ferreira. South Africa's need to find a way to get through to the next 5 or 6 overs. Build a partnership. Yeah, a lot of firepower in the batting order for South Africa. No David Miller, the experience of David Miller missing. Donovan Ferreira does like to use the long handle. It's how you navigate the passage of play. Do you try and play too many shots? Oh, nearly there to first slip. So 8 gone, 33 for South Africa. थोड़ा देरी बंद कर ढलान वाली जमीन है, बेचो से भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक की चुना, ऐसा क्यों? राव जी, हर जिंदगी में एक ही बात मिलता है, मान गए मिठा। घर एक मौका है, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। We've got one hope. Secret laboratory. In the middle of nowhere, our nation's best scientists focused on one goal. End this war. Didn't quite get a hold of it, but enough to keep it away from any of the fielders. What a start for India here. Would have been hearts and mouth stuff for the South Africans as another one goes up into the air. Safely away because the fielder was in the 30-meter circle on the offside. And the ball went straight. So there really was no danger there. South Africa have to do something out of the box, something a little.
bit different. The bowlers are bowling well. Maybe not look for boundaries. Maybe look to get the ones and twos. Get the scoreboard इसके moving. नीचे रखने के लिए होता है It just looked as though they might have got some sort of a partnership going. Stubbs and Markram, and looking to get going. It's time for a bankable fact by IDFC First Bank. Hardik Pandya, the first Indian to score 1,000 plus runs and take 100 or more wickets in T20 internationals. An important player in this Indian side with his all-round abilities, showed us his batting in game one and bowling actually. And then just to balance out everything, is able to do both jobs. What a good bouncer that. Very good bouncer. He mixes it up well. And we just saw those figures, 1,000 runs and 100 wickets. But it's not just those numbers. It's when he's got those runs, when he's got those wickets. And of course the fielding. He's an outstanding fielder as well. So often he comes into bat when a few overs are left and he'll hammer a 30 or just maybe 12 or 13 deliveries, something of that sort. That makes him so special, Hardik Pandya. Oh, has he got the bat down just in time or what? It stayed down, that's for sure. Two noises then that sounded like one of them was Woody. Clearly the Indian side thinks so as well. Not even. Height. He's very good behind the stumps, Sajid. He's very confident. Shot! Oh, that is brilliant. They've been sweating on something like that the whole night. The beautiful shot before that. Well, you can see that it's not exactly a half volley, but this is the class of the man. Aiden Markram playing it on the up, anticipating that there's not going to be that much movement. That is very good batting. A little bit of movement off the surface. 41 for 4. Kiwis, big matches में बड़ा दे hit. क्या करें? Second not सरजीत देंगे उनको करारी defeat. वेती है बीजेपी. Extra pressure में भी रखे. अंडा. सफेद कपड़ा. जर्सी की ऐसी तैसी. टीम इंडिया का नया स्टाइल. Always calm करेंगे calm. Shot second. Sky ball चलेगा, सबका बैट बचेगा. IDFC First Bank, India versus New Zealand. First T20I, 21st January at 6 p.m. The journey from prodigy to legend begins here. This is where great... पूरा डाउन हो जाएगा फेसबुक पे Do bat a long way down. South Africa, but if you lose wickets early, you would hope that you bat all the way to 11, so you could keep on with a similar sort of game plan. But conditions have not quite been how we expected, I don't think. With the dampness of the outfield and the ball kind of rolling across it, and granted it's not done that too many times, I expect that it would not continue to swing for as long as it did. To that end, Surya went 3 and 3 with Harshit up at the front.
And correct to do so because they kept heaping misery on South Africa. And even since then, just off the surface, the ball's just done a little bit. And so it's made it difficult for the South Africans. More difficult because they've lost all these wickets. There's tentativeness that creeps in. But must also give credit to the bowlers because they've kind of just kept the stumps in play and made it difficult for the batters. Amazing what happens with momentum or a lack of it. Oh! I think he hit it into the ground, but it went quickly to Abhishek. Oh, straight in and straight down. It's one of the shots that Corbin Bosch will like to play, especially if the ball is outside the line of the stumps. He'll look to take on that sweep shot. Getting a lifeline there from Abhishek Sharma. Halfway, 44 for 4. And drinks. Tulsa is my home now. This distillery is a very interesting business. We gotta go the enemy. What are you saying? They're threatening everybody in my life. If you think you're gonna take me out, it's gonna be really difficult. I wanted to give something to the fans that they didn't expect. We're going to do everything in our power to blow your mind. There's magic in the eras. All aboard! This is the biggest challenge we've ever done. Tonight, we complete that challenge. For one last time. टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आए सबका बदला लूंगा The best of anime on Geo Hotstar. We do anything for our kids. Who picked up my son from school? I will do whatever it takes to get my son back. If we're gonna go after this thing, it needs to be all of us. There's nothing he can do to stop us now. Let's find out. Radhe Radhe. Some sort of a total, get to a base and then try to somewhat tee off. But they've got to try and get a score that gives them some sort of a chance. Exactly. Because they've also got some good new ball attack. Won't make it easy for the Indians. South Africa 44 for 4, halfway stage, and the chit-chat had at drinks, and in comes Sevam Dube. How often that break, that drinks break, gets a wicket. And also what the South Africans will do is they'll look and say, well, having faced Arshdeep as well as Arshit and Hardik and Varun, all difficult to get away, they'll identify Shivam as one to try and get away. Bowl him! Oh, what a start! Right on the spot, and it pegs the stumps back.
Well, he's really worked hard on his bowling last couple of years. He's added a bit of pace as well. And he's bowling the right line and length as well. This is short of a length on a pitch where there is some help over there, and the ball has nipped back in. Big gap between bat and pad. I think a truck would have gone through that gap. So the middle stump's gone flying. And half the South African team is back in the pavilion for 44, and Bosch has contributed 4 in that. My name is Percy Jackson. He is cute. The danger the camp is under is greater than you can possibly imagine. What about Grover? You know where he is? Save Grover. Save camp. Sorry! Let's go do the impossible. I'm not going anywhere. Oh, get back! There's been action all around so far. We've had 5 wickets. We've had a couple of lovely looking boundaries from Markram's bat. And look at that. Oh, the stumps were out, so he has to approve the stump. Donovan Ferreira. Yep, he's faced the ball already. Yep, definitely something in it. Little nippage this way or the other. Shouldn't do very. Just hitting the seam perfectly. That high backlift of Corbin Bosch's, he probably thought to himself, if there's runs to be scored, it's going to be this man. Just a little nibble back between that big gap between bat and pad. And there's just been a little bit on offer for the bowlers tonight, and India grabbed it. Gap between bat and pad. Yeah, wonder if it is the coldness. Normally we turn up here and you kind of see it looking like that. You expect there'll be a high-scoring game. You expect there'll be lots of runs scored. No, it's just held enough on the surface. Look at the smile on his face there. Hardik saying, yeah, that's it. That's where we said you should bowl. Corbin Bosch gone. Oh, yes. Look at that for some nippage. It's a real beauty of a delivery. Move just a little away from the batter. But it's thudding into the wicket-keeper's gloves. That should make the South Africa fast bowlers also enjoy that. Failed it. Excellent. Harshit Rana. 11 done. It's 48 for 5. We want to take out the competition. What'd you think? I wasn't going to hear about this? What's my cut? This could be the greatest opportunity in my life, and it comes with danger. Is that a ghost? Well, I bet ain't nobody seen that coming. For the key to our survival, you must quest to the Sea of Monsters.
अब की बार जाके ना एक वो लेके आना है 8 for 5. We're in Dharamshala. And you see the glistening in the background is moisture, but it's not been trouble for India. No issues with gripping the ball. No issues with movement with regard to the ball off the surface either. It's a magnificent fielding effort from Harshit Rana. And that is what bowlers expect, and the captain appreciates. He saved 3 runs for his team. चौका पक्का चौका The 50's up for South Africa, but it's in the 12th over, and they've lost half their batting side. Would be a coach. Dale, you've been in there in the change rooms. I mean, one game, no runs, next one, loads of them, next one, nothing. The fluctuation, so mercurial besides some of them, and you kind of wonder, it's not as if you say different things each time as you go out there. Similar kind of game plans and methods. It's beautifully bowled. Yeah, consistency maybe in selection. Just one thing, just so that the players get the feel like they're getting into a series. However, the ball has swung tonight, and we've seen that when the ball has swung, all batters from both teams. Shots! Donovan Ferreira out of the ground. This ball's been swinging and seaming. I'll sort it out. Skip. We'll get rid of it. Well, he's a contender for the Apollo Tyres Go the Distance Award. He's picked the wrong one as well. We've been talking about the ball swinging, but when the bat has been swung in that manner, the ball's gone into the crowd. Great shot that. He's got a taste. Might be going more and more at the spin. 12 done, it's 58 for 5. Radhe Radhe. Radhe Radhe. आओ जी, खड़गाओ सेल्फी। पाजी, हाँ जी, थोड़ा साइड हटिए ना। जेट के साथ अकेले फोटो लेनी है। पूल चंद जी तो हो गए पूल के कुप्पा। स्टार स्कैनर प्रेजेंट्स जीतो दंदनादन। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के दौरान जीतो टैब पे जाओ, आसान से सवालों का जवाब दो और पाओ प्राइवेट जेट में उड़ने का मौका। स्काई स्कैनर पे पाइए चीपेस्ट फ्लाइट और होटल रेट। यही है अल्टीमेट ट्रैवल हैक। स्काई स्कैनर प्रेजेंट्स जीतो दंदनादन। Two gems of Indian cricket. Get ready. I'm a king, but I bop on my saint. They call me a bad man. What I do now, a whole lot worse. कल इसको सही करेंगे Into his second over, Shivam Dube. Yeah, how they work together, a partnership will be interesting from here on, given how Donovan Ferreira bats. He's already given glimpses of that with his attacking mindset so far, taking on left arm leg spin of Kuldeep Yadav. We saw what he did to Jasprit Bumrah in the previous game. Sunny G still here. Deepdas Gupta joins. Which is the reason, a bit of a surprise that he's batting at number 7. I thought maybe he could have batted at 6. Aiden Markram has batted beautifully. Yeah, India bowlers have bowled beautifully. There has been a little bit of help of the surface. Looking at all those wickets and the degree of swing and seam, you see both of them. Fair bit of swing and seam available for the bowlers. Most importantly,
generally we've seen when this ball goes out in the outfield, if there are initial 4s and 6s, ball gets wet, it's hit up in the air, should be another one, no, it goes down. Arshdeep Singh doing the hard work, reaching, but then flows it in the end. Yeah, this is something which India can't afford. You got them on the mat, you want them to stay on the mat, and Donovan Ferreira can do a lot of damage. Pretty straightforward. Looking at his hand, maybe the ball, did it slip out with the wet outfield out there? But these need to be taken. The second one put down so far. They've moved places now as he gathers the ball. That's the chance. Did he lose it in the background of the lights? He reached it. And we've seen some terrific catches being taken by this team. They've just been a little out of sorts in the tournament so far. Club through the onside. That is exactly what this man can do. He's very powerful through that side, and India have fed him there. Yes, I think looking to bowl another slow delivery because of the previous slow delivery. There was a chance there, but this was halfway down the pitch. And he gets into position very nicely, does Donovan Ferreira. So maybe the shackles have just been broken in the 13th over. Somebody needs to go pretty quickly to these fast bowlers and say, just bowl normal length. That's what has given us success so far. No need to try too many different things. You bowled a good delivery, you got a wicket on the first ball, continue to do it. 13 gone, 67 for 5. This is a whole different beast. I'm shooting a new TV show, All Spare. One verdict, unstoppable. I'm playing a lawyer on TV and studying for the bar exam in real life. It is hard being Kim Kardashian. I'm exhausted for you. Listen, it's good TV. Glenn Close at my house. I'm freaking out. I'm already drunk. This is gonna be good. You ready for the next adventure, pal? A couple of tall towers. But South Africa trying to get themselves out of a ditch. Varun Chakravarti. Just the 1 over for Kuldeep Yadav. He went for 10. Immediately ringing in the changes, the skipper. Guys, bowled well. Like the other Indian bowlers, Varun Chakravarti, this is third. Kuldeep's bowled 1. Maybe another over for Kuldeep. But already in the last couple of overs, you can see bowler struggling a little bit with Shivam Dube last over, bowling quite a few long hops. And that's something that India did really well the first few overs, picking up those wickets, making sure not too many boundaries. The ball, it's finally got a little wet now, but then it's already, 13 overs gone. I think it's just the intent. Suddenly the intent from a batter like Donovan Ferreira. He's coming and he's hitting the ball so nicely. And now the bowlers now tend to be just a little bit wary. Cleaned up. That is one of the reasons why he's such a special bowler. 50th wicket for Varun Chakravarti, and an aggressive Donovan Ferreira has to make his way back. Bowls that wrong one, misses it completely. Going for another heave over long on or mid-wicket, losing his stumps. And as soon as that happened, it was good to see Steve going to his throat and apologizing for dropping that catch. He's gone for 20, 69%.
They're just piling on the agony here, India. 69 for 6 South Africa in this third game here in picturesque Dharamshala. Marco Janssen in at number 8. 69 for 6. He's got superior batting powers, we all know that, but the situation is pretty dire. 74 is what South Africa got in the first game. They came back pretty strongly in the second game, but Donovan Ferreira, a big heave-ho, only to lose his off and middle. Give it a big rub before bowling that delivery because of the wetness. Varun Chakravarti, he's pretty unflappable himself with his temperament. Marco Janssen to face Varun Chakravarti. He's another big hitter, and he's been in very good touch, very good form with the bat. Mark from the skipper is at the non-striker's end. I don't know what the conversation would be. Quickest to 50 wickets. Kuldeep Yadav has got it in 30 matches. Varun Chakravarti's got it in 2 more. Arshdeep in 33. Ravi Bishnoi as well. Chahal in 34. The smart ones, the spinners, the good ones. And the fast ones. Just wondering when you're going to say that. Totally agree. Always good. They're always spinning a yarn, these spinners. Pretty strong comeback. Just 2 coming off it and a wicket. 69 for 6. ढलान वाली जमीन है, बेचो से। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक ही चुना, ऐसा क्यों? ताऊ जी, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। Presenting the all-new LG Essential Home Appliances. Your happier life is within reach today. Har Ghar Appliances, Har Ghar Happiness. We all know danger is around us all the time. It looks something like this. It will. A pretty special figure, Sunny Jaydeep. 1 for 7, Varun Chakravarti, given the circumstances, given what the ball's done early on, and also showcasing why he is the #1 bowler in T20 internationals. Yes, it does. Because this pitch is more for the quicker bowlers. We've seen a lot of seam movement. Generally, when the wrist spinners come into ball, you get to see a little bit of turn. We didn't see much turn from Kuldeep, and even when Varun's bowling is back of the hand, the googlies and the leggies, not much turn there. So these figures are absolutely terrific, outstanding figures for Varun Chakravarti. It doesn't give away anything. He's got an uninflected gaze. Pretty poker face, whether he goes for runs, whether he picks up wickets. Uninflected gaze, as I said, just amazing how he goes about it. 34 years old, deep. And it's been a fairy tale, isn't it? I mean, how he's made it so far and how well he's done at this level as well. Economy of less than 7, 50 wickets in 32 matches. What a difference he's made ever since he's been part of the side. He's a proper match winner. He is a wicket taker. If you look at it, you've got him and Kuldeep, 2 wrist spinners. Well, Varun might not be a wrist spinner per se, more of a finger spinner, but then 2 wicket-taking bowlers in that middle phase for India is so crucial, especially in this format. Also, when you think of world cricket now, they expect you to at least be good in 2 out of 3 disciplines. But when you look at Varun Chakravarti, he's an out-and-out bowler. And in a team where India talks about batting deep and having lots of bowling options, lots of batting options, just look at him. He's just a pure wicket taker.
That's his main discipline, and that's his principal discipline, and that's why he's getting picked. And it doesn't disappoint. Just about every game will get you, maybe not always 3 or 4 wickets, but it'll get you a breakthrough. And you're absolutely right. No wonder he is the #1 bowler in this format. He really has worked very, very hard to get there. Brilliant. Very, very good work. He's so good with the gloves. Pretty alert to the circumstances and situations, Jitesh Sharma. Definitely stopped a few runs here. The inside edge is never easy. That's exceedingly well to get a hand to that. Yeah, he's been impressive, Jitesh. Behind the stumps, both glove work-wise and also as far as DRS is concerned. Oh, will this be taken? Oh no, just misjudging it this time. Started running in, Harshit. Didn't pick it at all. It's been given as a boundary, given as a 4, which means he could have stayed on the ropes. Completely misjudging it, Harshit Rana. 8 coming off it, 77 for 6. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी एक आउट कर दिया था ढलान वाली जमीन है बेचो से भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक ही चुना ऐसा क्यों राव जी घर जिंदगी में एक ही बार बनता है मान गए बेटा घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट की देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक सर वाटर प्रूफिंग के लिए बेस्ट है थैंक यू जी एक छोटा सा गिफ्ट Yeah, what a golden opportunity for India to tighten the screws in that previous over. No need. Marco Jansen is defeated. And it's that man once again, Varun Chakravarti, lazy with the bat coming down. And South Africa lose yet another. He had no clue, absolutely no clue. He was just reaching for the ball, hoping that he was going in the right direction. Again, this is the one, the little wrong one which comes in. Look at that gap between bat and pad. Just knocking the off stump out of its socket. Now you know why he's #1, Varun Chakravarti, because if you can get your lower order batters, dangerous batters out cheaply, then you're doing a very good job for your team. Jansen gone for 2, 77 for 7 in the 16th over. Things happen here, but no one really talks about it. We have 25 disappearances 7 confirmed deaths something bad's coming कोई ज्यादा फर्क तो We're being hunted by a robot named Amelia. Megan's our only chance. I was programmed to protect Haley. How are you going to stop her? I'll get to work, sister. Yeah, it's been a procession of sorts. 77 for 7. It could have been 77 for 8 because Aiden Markram was missed in the last over. Andrik Nokia, is he going to pick Varun Chakravarti? Yeah, another wicket for Varun. But it's just a weird technique. No footwork, no nothing. Usually we see Marco Jansen come out with that positive intent. As something, Saisa, the point that you made earlier on, and the scoreboard, it plays tricks on you. It's an inside edge. So that's what I was thinking, what would have been the conversation between Markram, the captain, who's there. This is what happened off the last ball. Ball didn't quite come as quickly as he thought, and then Harshit Rana came running forward and then missed it. But like आज गौतम गंभीर इस बात से तो बिल्कुल खुश नहीं होते पहले वरुण चक्रवर्ती फिर राशदीप सिंह और यहाँ पर भी
मिसजज किया हर्षित राणा ने। एडन मार्करम का वो शॉट था, ये भी आउट हो जाते तो फिर समझ लीजिए थे कि वो ताबूत में आखिरी कील थी। उसको देख के चहल की याद नहीं आई आपको? आई यूजी चहल। ऑनरिक नोकिया पहला मैच खेले थे बाराबती स्टेडियम में, वहाँ हार्दिक पांड्या ने इनकी बहुत पिटाई की थी। फिर दूसरे मैच में उनको विश्राम कराया गया। अभिषेक शर्मा की फैमिली वहाँ मौजूद है एक्चुअली, अनुराग ठाकुर जी के साथ। बिल्कुल, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बहुत काम किया अनुराग ठाकुर सर ने। वो बड़ा ही खूबसूरत ग्राउंड रहा है आकाश भाई। वहाँ का नेट सेशन आप देखेंगे, अलग ही फैसिलिटीज है उधर। 16 ओवर की समाप्ति 81 पे 7। उसका कैच छोड़ दिया ना था। ढलान वाली जमीन है, बेचो से। अब 4 ओवर है, 4 में 50 मार। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक ही चुना, ऐसा क्यों? राव जी, हर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। पता नहीं इतना देर बेस्ट है सर। आर्किटेक्ट जी, समथिंग स्पेशल फॉर यू। बिरला ओपस अश्योरेंस देने के लिए। ऐसा क्या है? एडवांस्ड क्वालिटी। 1 साल में पेंट को कुछ भी हुआ तो पेंटिंग वापस करके देंगे, वो भी फ्री। क्वालिटी पे इतना कॉन्फिडेंस, इसीलिए बिरला ओपस अश्योरेंस। रजिस्टर करो birlaopus.com पर। प्रचार पे हट जा रहे होंगे। Presenting the all-new LG Essential Home Appliances. Your happier life is within reach today. हर घर appliances, हर घर happiness. 19 रन दूर है अभी भी साउथ अफ्रीका। हार्दिक पांड्या डालेंगे अपना तीसरा ओवर। एक सफलता उन्हें मिल चुकी है, 100 विकेट उनके पूरे हो चुके हैं इस फॉर्मेट में। रूम बनाया, अब थोड़ी सी गति भी दिखानी पड़ेगी, लेकिन इन सारे विकेटों के बीच में यहाँ 2 रन मिल जाएंगे। नोकिया का वार्म अप भी हो गया उसके साथ, लेकिन मिस चांसेस रॉबी जिसका थोड़ा सा मलाल रहा। ये तो बम बॉल लग रही थी जो अभिषेक के हाथ में सीधे गई थी, और उसके बाद ये ठंड है तो एक आध तो हाथ से छूटेगा ही, पर वो शायद सेकंड वाला लेना चाहिए था। पहले वाला थोड़ा मुश्किल था कैच, क्योंकि वो शायद वो एंटिसिपेट नहीं किया था उस बॉल को। ये बॉल बहुत बाहर था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप था बॉल, पर हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी पड़ेगी इंडिया को। सुरेश रैना से जानते हैं ठंड में कैचेस कैसे लिए जाते हैं। सुरेश नहीं, पकड़ने तो पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो आप देखेंगे ना, जो वरुण चक्रवर्ती का सामने गया, उसके बाद एक पहले जब ब्रेविस आए थे स्टार्टिंग में, हर्षित राणा ने वो बाउंसर का प्रयास किया था, उसके बाद अर्शदीप का सामने वाला कैच हो। क्योंकि ठंड होगी तो आपको थोड़ा सा ना लो करके आना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ड्यू जब गिरती है तो बॉल की ट्रेजेक्ट्री अलग चलती है, वो बैट से जोर से आता है बॉल वो, इसलिए आपको थोड़ा बाउंड्री से आना पड़ेगा। कैचेस के लिए आपको थोड़ा सा लो आना पड़ेगा कि बैट्समैन की स्पीड देखनी पड़ती है वो, क्योंकि भी जब साउथ अफ्रीका आएंगे ना वो कैच नहीं छोड़ेंगे। ये फील्डिंग में करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक मोमेंट आएगा ऐसे आपको कैच बनाने ही पड़ते हैं। वो जितेश ने बड़ा अच्छा स्टॉप किया पिछले ओवर में, वो अंदर से जो अंदरूनी किराना लगा वो। तो फील्डिंग आप ठंड में जितना ज्यादा कैचेस की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता है। पर हम खेलते भी कम है ना ठंड में, बहुत कम खेलते हैं, ज्यादातर गर्मी में ही खेलते हैं। हम सोचते हैं कि यार वो स्वेट हाथ में से कैसे निकाले ताकि हम अच्छा हाथ से फिसले नहीं बॉल। तो ज्यादातर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती है ठंड में, प्रैक्टिस कैचेस लेना या फील्डिंग करना, जो टीम्स जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बाकी सारे टीम्स को बहुत करने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है उनकी विंटर्स में। तो हमारे यहाँ वैसे नहीं है, और जो हम खेलते भी हैं ऐसे कंडीशंस में, जैसे कि चंडीगढ़ या धर्मशाला में ज़्यादा मैचेस नहीं खेलते हैं ऐसे ठंड में, क्योंकि इस ठंड में फील्डिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। लास्ट गेम चंडीगढ़ में था, हाँ बिल्कुल चंडीगढ़ में ही था, और फील्डिंग तो ठीक ठाक ही थी, पर वहाँ पे 9 डिग्रीज था, यहाँ पे 12 डिग्रीज है। मैच जब शुरू हुआ था तो वहाँ पे शायद 17 डिग्री था, और ऐसे कंडीशंस में फील्डिंग हमें ज़्यादा करने को मिलता नहीं है। तो अगर ऐसे कंडीशंस में, अगर जैसे हम वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, ये प्रेपरेशन क्यों कर रहे हैं, मतलब ये इसके बारे में बात क्यों करें, ताकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप
फील्डिंग अच्छा करो, पर क्या हमें धर्मशाला में खेलने को मिलेगा ऐसे कंडीशंस में? नहीं। तो क्यों छूट रहा है? मुझे लग रहा है कि कैचेस छूट रहे हैं क्योंकि हमें इस कंडीशन में प्रैक्टिस नहीं मिलता ज्यादा। फील्डिंग कोच भी क्या करते हैं, जैसे आज मैच है, आपको कल लेके आएंगे, वो आपको आधा पौन घंटा प्रैक्टिस कराते हैं। वो अंडर द लाइट्स आप करते हो आधा घंटा 50 मिनट, हमारे टाइम पे 1 घंटा फील्डिंग होती थी, चाहे वो डायरेक्ट थ्रोज हो, चाहे वो फ्लैट आप कैचिंग करा रहे हो, हाई कैचेस करा रहे हो। और आईपीएल में ना रिकॉर्ड रहा है 2 ग्राउंड में बड़े कैचेस छूटे, एक तो मोहाली में और धर्मशाला में। तो हमेशा जब भी आप फील्डिंग कोच से बात करोगे, हमेशा वो बताएगी इस ग्राउंड पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हो, आप थोड़ा सा बैटिंग बॉलिंग फिनिश करके ना आधा घंटा कैचिंग कर लो। तो वो प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नहीं, अब मैं बैटिंग कर सकता हूँ, बॉलिंग कर, लेकिन कैचेस तो मुझे पकड़ने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, क्योंकि जैसे रॉबिन ने अच्छी बोला कि हम इतने ठंड में मैच खेलते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो प्रैक्टिस आप करोगे जितना तो वो इम्प्रूव कर सकते हो। और सबका कनेक्शन यहाँ पे और सीधे फैंस की तरफ। नोकिया बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, उन्होंने बता दिया। ओवर की समाप्ति इस छक्के के साथ। ये बेस्ट है सर। हमेशा वाला क्यों नहीं? मिश्रा जी, आपके लिए हीरो की तरह बिरला ओपस रजिस्टर करो birlaopus.com पर। अरे बचाओ! आओ जी, खड़काओ सेल्फी। बाजी, हाँ जी, थोड़ा साइड हटिए ना, जेट के साथ अकेले फोटो लेनी है। फूल चंदी तो हो गए फूल के कुप्पा। स्टार स्कैनर प्रेजेंट्स जीतो दम दमादम। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के दौरान जीतो ट्रैक पे जाओ, आसान से सवालों का जवाब दो और पाओ प्राइवेट जेट में उड़ने का मौका। स्काई स्कैनर पे पाइए चीपेस्ट फ्लाइट और होटल रेट्स। पावर प्ले के आखिरी ओवर से और पिछले ओवर में बनाया, इसलिए वो सबसे ऊंची इमारत जो है वो जॉइंट टॉप। स्लोअर वन, ऑफ कटर का प्रयोग किया वहां पे और बल्ला छूट चुका है हाथ से। 4 रन भी मिल जाएंगे माकरम को, बस किस्मत के साथ। बॉल ही छूट रहा है तो बैट भी छूटेगा ना इस ठंड में। कोशिश की थी कि मैं जितना जोर से मार सकूं उतना जोर मारूंगा, और उसके बलबूते ये गया पॉइंट के ऊपर, वरुण चक्रवर्ती के ऊपर। 130-35 यहाँ पे ठंड ऐसी होती है, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ प्लेयर्स के लिए, पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ठंड के मौसम में ना फील्डिंग करना, वो हाथ का फील ही नहीं रहता आपको। वो इतना ठंड होता है कि आपको लगता है कि यार ये दूर गया, बहुत ज्यादा दूर गया, ऊंचाई भी और बाउंड्री लाइन के बाहर भी, और इसके साथ 50 माकरम का। 2 साल का इंतजार रहा है ये एडन माकरम के लिए। कप्तान है इस फॉर्मेट के, इस देश के, और आखिरकार मौका मिला कि उनके इर्द गिर्द सब कुछ होता हुआ धराशायी, लेकिन बड़ी शाही पारी खेल गए हैं एडन माकरम इस सब के बीच। भरोसेमंद वाली पारी, वो एक दूसरे एंड से विकेट गिरते गए, लेकिन उनका जोश, उनका जज्बा सिचुएशन को रीड किया, उधर ठहराव से लगे रहे, अच्छे रोटेशन देखने को मिली। अब ये यहाँ से 130-140 रन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए साउथ अफ्रीका के लिए। ड्यू भी होगा बाद में, उसका अफसोस ना हो जाए कि सारे फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ से कितने रन जोड़ सकते हैं एडन माकरम। उम्मीद यही है कि भारतीय कप्तान का भी आज 50 आने वाला है। एडन माकरम ने भी एक बड़ा लंबा इंतजार समाप्त किया है। 2023 के बाद इनका 50 आया है। नवंबर 2024 से सूर्य कुमार यादव के 50 का इंतजार है भारत के लिए। और हम बात कर रहे थे शो पे कि 100 पारियां लगभग अगर आपने खेली और स्ट्राइक रेट आपका फिर भी 164 का है, तो कहते हैं ना अर्ली लीड, वो सूर्य कुमार यादव ने इतनी बना दी है 2020, 21, 22, 23, 24 में, कि इसीलिए 2025 से उम्मीदें इतनी ज्यादा है। बिल्कुल, इतने हाई क्वालिटी प्लेयर हैं कि वो उम्मीद हमेशा थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। और मैं अभी भी मानता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छा बैटर में से एक है T20 फॉर्मेट में। मुझे लगता है कि सिर्फ एक पोजीशन मिलने की देरी है। अगर वो लगातार एक ही पोजीशन में 2-3 मैचेस खेलेंगे, मुझे यकीन है कि हम सूर्य ऑफ द ओल्ड को देखेंगे बिना कोई शक। थोड़ा रॉबी टाइम भी स्पेंड करेंगे ना, क्योंकि ये विकेट आप, मुझे लगता है कि आप नंबर 3 आ रहे हो, नंबर 4 आ रहे हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो ये इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने अलग तरीके से इन्होंने मैच जिताए भारतीय टीम को। आप तो सही बोल रहे और आज
मुन्ना भैया की डायलॉग में 3 बैटर पे देखो कितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं वहां पर। सैमसंग को भी चांस मिला है, संजू को भी टीम में नहीं। ये भी अच्छा शॉट, अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं माकरम यहाँ पर कप्तानी पारी खेलते हुए। आनंद भाई बेहतरीन शॉट, ये इंतजार किए, एंटिसिपेट कर रहे थे कि शॉट स्लोअर बॉल आ सकता है और वो वही था, दिखा दिए थे हर्षित राणा ने। थोड़ा बैठ के आया ये बॉल पिच में से तो सीधा मार दिए इस पुल शॉट को, ना कि मिड विकेट की तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रन ये। पिछली 11 गेंदों में 35 रन आ चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। पिछला ओवर 17 रन देके गया था तो इस ओवर में 18। अचानक हल्का सा टर्न अराउंड साउथ अफ्रीका के मोमेंटम में। पूरी इनिंग्स ये संघर्ष रहा है, हल्की सी मिसफील्ड कप्तान द्वारा। सिंगल वैसे भी मिल जाता, शायद सिंगल ही मिलेगा, लेकिन 19 रन हर्षित राणा के चौथे ओवर से। ढलान वाली जमीन है, बेचो से। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक ही चुना, ऐसा क्यों? ताऊ जी, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। ये बेस्ट मैन। अजय भाई, दिस वाज फॉर यू। बिरला ओपस इंश्योरेंस देने के लिए। ऐसा क्या है इसमें? एडवांस क्वालिटी। 1 साल में पेंट को कुछ भी हुआ तो पेंटिंग वो भी फ्री। क्वालिटी पे इतना कॉन्फिडेंस, इसलिए बिरला ओपस इंश्योरेंस। रजिस्टर करो birlaopus.com पर। Presenting the all-new LG Essential Home Appliances. Your happier life is within reach today. हर घर appliances, हर घर happiness. वरुण चक्रवर्ती के उन 2 विकेटों के दम पे हार्दिक और दुबे ने जिस तरीके से खाता खोला, अब एक अच्छी फिनिश। 19वें ओवर की जिम्मेदारी हर्षदीप सिंह की। सफलता पहले ही ओवर में मिल गई थी हर्षदीप को। वाइड फुल टॉस के साथ शुरुआत की है, बिल्कुल निचला आप लगा बल्ले का और माकरम ये शायद सिंगल, हाँ ले लिया है सिंगल। तो 9 के अब स्ट्राइक पे रहेंगे तो अच्छा मौका हर्षदीप के पास। बाय द वे, टाटा आईपीएल ऑक्शन 2026 16 दिसंबर मंगलवार का दिन होगा। दोपहर 2 बजे से हमारी कवरेज लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, जियो हॉटस्टार पे। और बहुत कुछ जो अप्रैल मई में होगा उसका फैसला 16 दिसंबर को हो जाएगा। रॉबी और सुरेश रैना को तो रॉबी कह रहे हैं मार्च में, सॉरी हमें थोड़ी सी घड़ियां आजकल चेंज करनी पड़ती है, कैलेंडर भी मार्च में शुरू हो जाता है और जून तक जाता है। बहुत लंबा जाता है भाई। फिर से फुल टॉस गेंद, वो वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, एक यॉर्कर की कोशिश रही है हर्षदीप सिंह की इस ओवर में अभी तक। फील्ड के हिसाब से डाल रहे हैं। माकरम के लिए डीप पॉइंट, डीप थर्ड मैन पीछे हैं और हार्दिक नोकिया के लिए सिर्फ पॉइंट अंदर है और स्वीपर कवर बाहर है, तो वहीं पे डालने के लिए कोशिश करें तब, क्योंकि सामने वाला बाउंड्री छोटा है और स्क्वायर बाउंड्रीज बड़े हैं, तो प्लान के हिसाब से डाल रहे हैं। तो यॉर्कर भी अलग दिखी है कि लास्ट गेम के बाद इस वाले मैच में जो फील्ड प्लेसमेंट आप बात कर रहे हो, डीप बैकवर्ड पॉइंट देखोगे, डीप पॉइंट बिल्कुल वो स्टंप की सीध में, इसलिए बाहर डालने को देख रहे हैं बिल्कुल। और ये विकेट हो सकता है, जी हाँ, बड़ी सफलता। दूसरा विकेट चटकाया हर्षदीप ने। जो भी शक कर रहे थे हर्षदीप के बारे में कि क्या वो गीले बॉल से डाल सकते हैं डेथ में, ये रहा आपको सबूत है कि वो लाजवाब बॉलर है। T20 क्रिकेट में दुनिया में सबसे अच्छे बॉलर में से एक है। अच्छा लेंथ, डायरेक्शन भी सही थी। और ईडन मार्कम चलते बने, अच्छा कैच वहां पे। पहला T20 इंटरनेशनल अर्शतक लगाया बतौर कप्तान। 3 साल का इंतजार खत्म किया ईडन मार्करम ने, लेकिन अब उनकी पारी खत्म होगी हर्षदीप की इस गेंद पे। 61 रन ईडन मार्करम। ढलान वाली जमीन है, बेचो से। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक ही चुना, ऐसा क्यों? ताऊ जी, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। सर, वाटर प्रूफिंग के लिए बेस्ट है। थैंक यू जी, एक छोटा सा गिफ्ट।
बिरला ओपस अश्योरेंस देने के लिए। ऐसा क्या है इसमें? 1 साल में वाटर प्रूफिंग को कुछ भी हुआ तो वापस करके देंगे। वापस करके देंगे। वो भी फ्री। पेंटिंग में पहली बार बिरला ओपस अश्योरेंस। रजिस्टर करो birlaopus.com पर। इसको है ना ये वाला बदलने वाली है रियलिटी शोज की दुनिया। द 50 कमिंग सून जियो हॉटस्टार और कलर्स पर। विकेट गिर चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के लुंगी इंगीडी। ऑन स्ट्राइक हर्षदीप के नाम 2 सफलताएं। अजहर दिशा दिखा के सिंगल लेने की कोशिश थी, लेकिन दिशा कितनी बार इस 19वें ओवर में हर्षदीप सिंह ने दिखाई है। बुमराह नहीं रहते तो ये 19वें ओवर की जिम्मेदारी इन्हीं के पास आती है। अपनी लाइन पे, अपने प्लान पे अडिग रहे और मिल गया उस स्पाइक अल्ट्रा एज पे। उस एंगल से ना मैं थोड़ा सा बॉल बाहर भी चलता है। पहले वो दूर रखा, पॉइंट पे गया बॉल, उसके बाद थोड़ा दूर रख के अच्छा कॉट बैंड मिला उनको। लगी दिखे हर्षदीप आज मैच में, अच्छी वो पेस, अच्छा वो लाइन लेंथ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई अभी जब वो विकेट गिरा। गौतम गंभीर ने कुछ राय दी थी दिलीप को, जो कि फील्डिंग कोच है भारत के। उन्होंने संजू सैमसन को कहा चलिए उठिए, आपके लिए मौका है कि आप जाके जरा एक संदेश पहुंचाइए हमारा। संजू पहुंचे और इसके बाद के जो 2-3 सेकंड है वो इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगा कि कुलदीप यादव की तरफ इशारा गया है कि उनसे 20वां ओवर डलवाया जाए। हार्दिक का एक बाकी है जस्ट बाय द वे। कुलदीप ने एक ही डाला है। मुझे लगा बोला है कि केक आ गया, कटिंग के लिए तैयार हो, उनका आज बर्थडे है। ये भी ठीक है, बर्थडे है, लेकिन एक ही ओवर डाला है। अब क्या कुलदीप दिखेंगे आपको? 19 समाप्त। ये बेस्ट है सर। हमेशा वाला क्यों नहीं? मिश्रा जी, आपके लिए फूलों की बरसात। बिरला ऑफिस एश्योरेंस देने के लिए। मतलब प्रोडक्ट वारंटी। ये एक्स्ट्रा है। 1 साल में पेंट को कुछ भी हुआ तो पेंटिंग वापस करके देंगे। वापस करके देंगे? वो भी फ्री। पेंटिंग में पहली बार बिरला ओपस एश्योरेंस। रजिस्टर करो birlaopus.com पर। अरे बचाओ! आओ जी, खड़काओ सेल्फी। बाजी, हाँ जी। थोड़ा साइड हटिए ना, जेट के साथ अकेले फोटो लेनी है। फूल चंद जी तो हो गए फूल के कुप्पा। स्काई स्कैनर प्रेजेंट्स जीतो दम दनादम। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के दौरान जीतो टैब पे जाओ, आसान से सवालों का जवाब दो और पाओ प्राइवेट जेट में उड़ने का मौका। ये देखिए कोई से आखिरी ओवर के लिए कुलदीप यादव को बुलाया। 87 अभी तक हाईएस्ट 89 क्या साउथ अफ्रीका ऑल आउट होगी? क्विक वन। एक विकेट जाएगा, 2 नहीं। कुछ वैल्यू नहीं, बाहर से कोच सुरेशी के बॉलिंग बर्थडे है भाई का, 2 तो चाहिए उसको। आई लाइक दैट। इस बॉल पे एक ले लेते हैं। अरे नहीं, देखिए सोच रहे हैं कि स्टेप आउट करेंगे तो बाहर गूगली डाली है इन्होंने। स्टेप आउट नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे बॉल के लिए। अभी तक हाईएस्ट। बिल्कुल सही कहा, अच्छा कलेक्शन इन दी एंड। कर दिया आउट। आगे की तरफ बढ़े जरूर थे, लेकिन बढ़े हुए कदमों को रोक दिया गया है। बर्थडे बॉय विकेट के साथ अब कर रहे हैं सेलिब्रेट। जब खुश होता हूँ प्लेयर मुझे जो प्रूव करते कि मैं गलत हूँ। टॉप स्पिनर था ये, बॉल स्टेप आउट किए। एंड्रिक नॉकिया ने इजी स्टंपिंग जीते शर्मा के लिए। एक विकेट तो आ गया यहाँ पे, यहाँ दूसरा विकेट आएगा। बर्थडे बॉय के लिए एक और विकेट आएगा आएगा। अभी भी 3 गेंदें बची हैं। एंड्रिक नॉकिया 12 पर आउट। 115 पे 9 साउथ अफ्रीका। As far back as I can remember, I've always wanted a boyfriend. एक और विकेट कुलदीप। ये शॉट अच्छा था, अच्छे फील्डर है मौजूद। एक ही रन मिलेगा, स्ट्राइक रहेगी एंगेडी के पास। गेंदे हैं 2, विकेट चाहिए 1। मुझे तो लगता है ले जाएंगे, ये खड़ा होने वाला है बॉल। बैठक
मारने का प्रयास होगा। किरान से ले जाके पड़ी, डोली से काम ना चली। बाप रे बाप, हजला हुन की मार दी है के हाली एजी से उत्तर प्रदेश। बड़ा हिंच के मरला नो, लेकिन लागा लादा डोली में तू नौकिया इनका के लेके जीवा एनगीडी के। हाँ सोचनी है। बाप रे बाप, चरा के एकदम डर पकड़ो उखाड़ दी एकदम करना तो सब के डोली भी लोहा के बना से काम ना चले। बुलडोजर लेके पड़ी तभी उठी है, लेकिन ये विकेट उठ रहा भाई गेना में काबा। रन मत बचाओ रे भाई, विकेट निकाला तू कहां कहता हो बैट्समैन बैन बांटे ले, विकेट भी बांट दी है जी। मरला तो बड़ा क्यों बांटे? हां हां बांटे। ए और में 2 रन के भविष्यवाणी रहला, लेकिन 2 रन के साथ 2 विकेट भी आ गई बा। 2 जना चल गए बड़े में। बैटमैन कहता है कि हम बांटे नहीं, ऐसे नाम हमार बैटमैन बा। कुलदीप के हम विकेट बांट के जाता नहीं, दिल भर करके जा रहल बानी। कलन की छूछे तू कहे जी बा कुलदीप भाई बात तरह कबे कहनी कि भाई जब विकेट ना मिलला कुलदीप पे आखिरी में देखनी है कि विकेट मिल जाला। आई देखा आखिरी में ये भाई लग जा गेना में तो ऐसा ना लगा। अच्छा ही ये कहता हूँ कि मार के इतना दूर बेगम की भेज दम लखनऊ ही जैसे अब आटा सब कोई के मिठाई सूर्य कला रूप हमरा भी जाता है कोई मत जाला। हां हम ही बॉलिंग लगे लेबे तो कैच हम ही धरे डाला। तो एगो बात हम कहे तनी, बल्लेबाजन के बहुत खराई हो गइल बा, लेकिन गेंदबाज क्यों के खराई ना होए त क्यों छूछे नहीं के सब जना के विकेट भेटाइल बा। सब कोई कुछ ना कुछ लेके गोल भाई ये जाता ना छूछे, लेकिन लास्ट में इनका भी मिल गया विकेट। हार्दिक एजा बड़ा खुश बने जा। अरे कप्तान साहब भी गच बने जा। तेज स्कोर के बात कर लिया जाए तो 1 से 6 ओवर में 25 रन दक्षिण अफ्रीका बना हुए, 3 विकेट गिरे हुए। 7 से 16 में 56 रन बने हुए, 4 विकेट गिरे हुए। और 17 से 20 में 36 रन और 3 विकेट। देखा भारत दक्षिण अफ्रीका के 117 रन पर निपटा देले बा, समेट देले बा। और भारतीय बल्लेबाज आई है और धाक से 118 बना के अपना टीम के बढ़ाती हुई है। जाके लेके आओ, कुकर कर लेके आओ, जाके खाना खाओ। हटा देते हैं बंद कर।